आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी डाई एम्प्टी और लास्ट कुछ दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था. Then I thought, let me do this program and express my thought about this concept of dying empty. सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और क्रेडिट देना चाहता हूँ. टॉड हेनरी ने एक किताब लिखी है, गिविंग क्रेडिट टू टॉड Henry for this concept. I have added a lot of my own concept, but there are some concepts which belong to Todd Henry जो हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपसे सभी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी दूसरे की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, रेफर करते हैं, उस बंदे को लिविंग और डेड क्रेडिट जोड़ दीजिएगा. इससे इससे ह्यूमन काइंड को सपोर्ट मिलता है, लोगों को अच्छा फील होता है. और कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपने नहीं किया है उसकी क्रेडिट आप लेते हैं. इसको मैं कहता हूं मेंटल मसल बिल्ड करना. सॉरी. तो कॉन्सेप्ट क्या है डाई एम्प्टी का? फिनिश द इंपॉर्टेंट थिंग्स. आज आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, जो भी आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले आप फिनिश करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अंतिम समय कब आएगा ये किसी को मालूम नहीं. आज, कल या 50 साल बाद किसी को मालूम नहीं, मगर आना है. इसलिए पेंडिंग मत रखिए. जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को थोड़ा सा एक एनिमेशन करना होगा. एक सेकेंड होल्ड कीजिए. The concept of this program, Die Empty, is that do not regret if the call comes today. इंसान को बहुत अफसोस होता है कि अब जाने का समय आ गया. पूरी जिंदगी निकल जाती है, आराम और मजा नहीं मिलता, और जाने का समय आता है तो दर्द होता है. मैं ये बताना चाहता हूँ, do not regret if the call comes today, tomorrow, or after 50 years. You have to build your mental muscle for this. Remember, when the final day arrives, there will still be things unaccomplished, and it's okay. कुछ भी कर लें आप, बड़ा से बड़ा आदमी, छोटा से छोटा आदमी, कुछ तो रह ही जाएगा. कुछ काम तो रह ही जाएगा. और जब कुछ काम रहना है तो आज रहे, कल रहे, 50 साल बाद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. और मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे और आपके जाने के बाद दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कोई भी काम जो आपने हासिल नहीं किया, फिनिश नहीं किया, दुनिया को उससे फर्क नहीं पड़ेगा. दुनिया एडजस्ट कर जाएगी उस चीज से. 3 दिन, 5 दिन, 7 दिनों में पूरी दुनिया एडजस्ट कर जाती है, और परिवार वाले भी महीने भर में एडजस्ट कर जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं करेंगे तो कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा. इस चीज को लेते हुए चलिए, कोशिश कीजिए. और अगर आपको फिनिश करना है तो आज फिनिश कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की के बारे में बात करना चाहूंगा. आप सबको मालूम है, मगर मैं अपना कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ. मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की में 5 चीजें आती हैं: फूड, शेल्टर, मनी, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हमारे बहुत से मित्रों जो आप ज्वाइन किए हैं, उनके फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो चुकी है. काफी लोगों की मनी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी है. और जिनकी मनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, वो जिंदगी भर कभी पूरी होगी भी नहीं. ये प्यास कभी मिटेगी नहीं. और पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है. आप मेहनत कीजिए, पैसा कमाते रहिए, इसमें कोई गलत नहीं है. मगर कहीं ना कहीं आपको 5वें स्टेज पे जाने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन 5वें स्टेज पे पहुंचने के पहले पैसे आपने कमा भी लिया, ट्रेल इनकम बन भी गई, तो चौथा जो स्टेप है ना, वो सबसे मुश्किल है. और यहाँ परेशानी आती है कि हमें पैसे से ज्यादा इज्जत, मान सम्मान की भूख होती है, और उसके वजह से हम फिर अटक जाते हैं. और इसके बारे में मैं आपको आगे 2 स्लाइड में बताऊंगा कि हाउ यू कैन मूव अहेड. ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, मगर उसके पाने का एक अलग तरीका होना चाहिए. खुद के मुंह से अपनी बड़ाई करके पाने का कोई मतलब नहीं बनता. 5th स्टेज जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है, और इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, हमने क्या पाया, क्या सही, क्या गलत, की जो जो विजडम कहते हैं हम, उस चीज को जितनी जल्दी आप हासिल कर सके उतना अच्छा होगा. और मैं आपको बताऊं, आइटम नंबर 3 और 4 आप सभी के लाइफ में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल होने वाले हैं आइटम नंबर 5 पे जाने के लिए. जितनी जल्दी आप मनी और रिकॉग्निशन से आगे बढ़कर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, उतना अच्छा. मैं ये नहीं कहता कि मनी और रिकॉग्निशन को पूरा छोड़ दीजिए, मगर एक बैलेंस बना करके
आइटम नंबर 5 यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आपको मूव करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेरे 3 स्लाइड्स और हैं, 5-7 मिनट और लूंगा। सबसे बड़ा फियर इंसान को ये नहीं होता कि वो मर जाएगा, उसका फियर ये होता है कि डेथ कैसे होने वाली है, कितना दर्द होने वाला है। इफ आई एम राइट, प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स, डू एग्री विथ माय थॉट? द फियर is that the agony that precedes death is more fearful than death itself. कि मौत की वजह क्या होगी, किस उम्र में मौत होगी और कितना दर्द होगा, इससे ज्यादा डर होता है। किसी की साइलेंट मौत होती है ना, तो उसको तो पता ही नहीं चलता, वो चला गया, पेन नहीं होता, वो भी खुश, परिवार वाले भी खुश कि दर्द नहीं हुआ। क्योंकि जब चले गए तो पता ही नहीं है ना कि चले गए, खत्म हो गई चीज, फिनिश्ड। सफरिंग बिफोर डेथ इज द फियर। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, बिल्ड योर मेंटल मसल, कि ये तो होना है, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। और ये मेंटल मसल से आप रोज इसके बारे में सोचेंगे, जिसको कहते हैं ना, रोज किसी चीज के बारे में सोचने से उसकी खुशी और उसका गम दोनों खत्म हो जाता है। मौत से ज्यादा मौत का डर है। अतुल वसानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और काफी लोगों ने भी सेम पॉइंट यहाँ लिखा है। इसके लिए आपको मेंटल मसल बनाना पड़ेगा। मैं कोई सेंट नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊं ऐसा करोगे तो डेथ का डर खत्म हो जाएगा। मगर मैंने ये समझा है, ये जाना है कि रोज मौत के बारे में सोचने से, व्हेन यू थिंक अबाउट डेथ एवरी सिंगल डे, you forget the fear of death. Then that death, at some point of time you will feel that death is a part of life. Couple of slides more, and here's the main concept of this dying empty and what you can do to improve your life quality and die empty. The question of die empty is this, that जितना कुछ करना है करके जाओ दुनिया में, ताकि जाते वक्त खाली हो जाओ कि सब कुछ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, you know whatever you want to achieve in life, do in life, you do it before you die. You donate every, for example, it is not practical feasible, but you donate every penny, that you don't have any penny before your last breath, so you are dying empty. You travel to every destination that you want to travel, and don't make a list of 200 countries, maybe a little lesser list which you can actually achieve, so that you feel that, okay, I have done this also. I will say some of the ideas, and there are 3 or 4 ideas here. Before you die, आज से लेकर के अंतिम समय के पहले जितने लोगों ने भी आपको मदद की है, आज से उसकी लिस्ट बनाओ और उनको फोन करके बोलो थैंक यू सो मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी मित्र ने आपको किसी समय कोई हेल्प किया है, कोई रिलेटिव ने आपको हेल्प किया है, और संकोचवश, because of hesitation, because of embarrassment, you have not said thank you, and you feel obliged for that person, with that person, call up today, write an email, send a message, thank you for being a part of my life, and do it with your heart, so that when we are ready to go, we do not have this feeling that, okay, I did not thank that person who made such a difference in my life. Similarly, say sorry. We all make mistake, and because of us, there are people who are affected, and they suffer because of us. Maybe not for life, but for a moment, whatever it is. जाने अनजाने में अगर आपसे भूल हुई है, तो फेसबुक पे मैसेज डालने से नहीं होगा कि आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। इट मींस नथिंग, आई एम टेलिंग यू, इट मींस नथिंग। What means is that you message that person, you pick up the call, and just phone and just call that person. Hey, I wanted to just say sorry. That day I did not behave properly with you, or this which I did for you was not right. I'm so sorry. I feel bad about this. I hope you will forgive me. Just call up. The moment you call up that person, he may not be very happy. Maybe will scold you, or whatever, but you will feel relieved that you actually acknowledged your mistake, acknowledged the thing, the suffering you gave to someone else. Just say sorry before you end your life, and this will help you. This will help you being empty. And the third thing, forgive yourself. This is the most important thing. आपने कुछ गलतियां की है, मैंने कुछ गलतियां की है, सबसे गलतियां होती है, और हमें इस चीज की गिल्ट होती है। We will live in guilt for certain issues in our life, certain things that we have done in the past. My thought is that don't live in this guilt forever. Forgive yourself today, now, and forever, that you want to start a fresh life, restart all over again, as if you are born today. Don't carry the baggage of the past, even if you made a mistake, even if you hurt somebody.
it's okay, ho gaya, you cannot reverse that going into the past. So forgive yourself with a promise that I will never do this thing again in my life. And that commitment, that thought that you will not do it ever again, you will not repeat that, will will be good enough for you to restart all over again as if you were born today. Finally, re-examine your life. I think this slide will last maybe one more. Dedicate your life for a cause. If you like selling mutual fund and you want to make a difference in 200 people, 400 people to have a good financial life, dedicate your life for it. If you want to teach, if you want to do caregiving, if you want to help certain section of the people, you want to create a foundation, you define one or two or three purpose in your life and you live the rest of your life for that cause. And so when the final time comes, you will feel I did something which I wanted to do. And do what you love. When I say do what you love, is that if you like selling mutual fund, sell mutual fund. If you like a foundation, find that passion, find that love, and you will not regret yourself. And I'm telling you, you will not regret. Many people, for example, who are into a job, they always want to quit their job and start something on their own, but there is fear and they are unable to do that. My message to all those people is that quit today, not tomorrow, and start doing what you love. Maybe you will fail, maybe it will not be as lucrative as you thought it would be, but you will never regret that decision. That because more than 70, 80, 90% of people who do what they love, they can spend 16 hours, 18 hours doing that, and still there will be no stress, there will be no panic, there will be no parishani, because you love doing what is your passion. Take my advice: before you end your life, you do what you have always craved for. If you wanted to be a magician and you are selling mutual funds, stop selling mutual fund, or maybe do it half and spend half of your time today composing music rather than after 10 years. That time will not come, my friend, because after 10 years, it will be later 10 years, and after 20 years, it will be later 10 years. It will never happen. And cut your cost if it drives you to do things you don't like. For example, if you don't like something, if you don't like your job, if you don't like selling mutual funds, if you don't like selling insurance, if you don't like anything what you are doing today, uh, cut your cost. Live on a bare minimum money, and leave your job, leave selling mutual fund, leave selling insurance, leave doing whatever you are doing which is not making you happy, and start doing what you want. The first thing that you have to do is that cut your cost. A 5,000 rupees mobile handset will also work very well if it can help you live a life dedicated for a cause and doing what you have always loved. If you cut your cost and bring your cost down, which is within your means, it will allow you the freedom to do whatever you want in your life. And lastly, be yourself. And if you like this presentation, do encourage these talks in the chat box. Be yourself. Never speak about yourself and your accomplishment unless someone asks you specifically and seriously. And as I said, Maslow's law of hierarchy, the fourth part, recognition, is the most dangerous thing in our lives. Most of you will have money, shelter, food, shelter, money. All of you will have at some point of time enough. But this recognition, the fourth, is the biggest hurdle and obstacle to achieve self-actualization and become wise. Because we always want to tell other people what achievements we have made, what accomplishment we have made, even if the other person is not interested, because no one is interested in your life. The way you are mostly not interested in other people's life, other people are also not interested in your life. Have you ever thought about this? When somebody is talking about their achievements in life, you're not interested to hear that. You are interested in when that person will stop talking and you start talking about your accomplishment in life. In the same manner, the other person is not listening to you because you were not listening to the other person. So my suggestion is that do not be at the mercy of others to judge you. Do not be at the mercy of others to judge you who you are, how much money you make, and how much achievements you have. Do not compete with other people. Do not compete with other people. You have 25 crores of AUM and somebody has 2,000 crores of AUM. Do not compete. Be inspired by that person rather than competing with that person, because you may be knowing
You may be waking up at 5 o'clock and you are healthy, and the other person might have some disease. You never know. You have a complete family. Somebody might be missing somebody. You never know, and you are only comparing your AUM with that person's AUM. That's not full and final and complete. So you are a different human being. The other person is a different human being. Everybody is different, and do not be at the mercy of others to judge you. Do not compete. And again, you have to build your mental muscle to achieve this. And my final word is that whoever you are, respect yourself. Respect yourself. Respect the other person, and respect yourself. And the first line and the third line is that, do not wait for others to respect you. If you respect yourself, and you should not talk about what you do when you respect yourself. You should be happy with the, even if the world is not recognizing you, you should be happy. If you are doing something because the world should acknowledge you and respect you, then that respect will never come from yourself, your within, because you're always looking from other people, judging yourself from the other people's respect. That muscle, that respecting yourself comes from within. And when you do all these things, you will die empty much before you actually die. And if you want to know more about these things, probably one of the finest men, of course, different people have their different faith and followings. I follow Osho a lot. I hear him a lot, and he talks about death. And one of his book is that मैं मृत्यु सिखाता हूँ. Die every day, and then you will fear the fear death. And my final message is that those who live fully die empty. And my message for the day for all of you is to die empty. And die empty means doing everything that you want to do. So there is nothing, no more urge left in you before you go away from this world, before you take the last breath. You have done everything. You have said sorry to everybody. You have said thank you to everybody. You have respected yourself, and you have made a difference in people's life and your own family life, and that is sufficient. With that, I will say thank you so much. And I hope you like this session, short session, 10-15 minutes. Very different session. I tried to do this today. It's not about mutual fund or master stroke, but sometime, I get you join this session and I talk about this. Thank you so much.